NMIMS interview calls are out, and with that, you have yet again another pressure to prepare for the competency test and the AI based interview. ये दो नई चीजें जो NMIMS ने लास्ट ईयर से ऐड की है, आपको इसके लिए भी thoroughly प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज yes, you have a majority chunk of weightage for the competency test. और इस बार तो वेटेज इनफैक्ट चेंज भी हुआ है. देयर इज 60% वेटेज फॉर द कॉम्पिटेंसी टेस्ट. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जिनको भी एनएमआईएमएस से अभी कॉल्स आए हैं, all of you will have to fill the form by 25th of January by paying 1200 rupees as the registration fee. So make sure you thoroughly prepare for the competency test. And in this particular video, I'll be explaining you everything in detail about the competency test, its paper pattern, okay, what type of questions you can expect, some sample questions too, and also about the AI based interview. So make sure you stick till the end. And hello everyone, and a warm welcome to Supergrads CAT YouTube channel. My name is Neelam Ma'am, and now without wasting any more time, let's get started. ओके, सो सबसे पहले तो अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूं, तो इस बार जो एनएमआईएमएस के कट ऑफ्स गए हैं एमबीए कोर एचआर एनालिटिक्स के फॉर ऑल कैंपसेस, इट्स 209, and MBA Pharma, it's 190. So the overall cutoff is the same as last year, but there has been a change in the sectional cutoffs. So MBA Core, HR Analytics और Digital यानी कि all campuses का 60 60 60 for all the three sections. लास्ट ईयर से स्लाइटली कम हुआ है सेक्शनल कट ऑफ, बट एमबीए फार्मा का स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, तो इट्स 50 60 एंड 55. ओके, सो सेक्शनल कट ऑफ में डिफरेंस है. इट हैज देयर हैज बीन अ चेंज ऑब्जर्व फ्रॉम लास्ट ईयर, बट जो ओवरऑल कट ऑफ है दैट इज द सेम एज लास्ट ईयर. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग सच एन असेसमेंट टेस्ट एंड एआई बेस्ड इंटरव्यू. ये सब रखने का क्या पर्पस है? So the updated format aims to align with industry feedback regarding candidate readiness. It emphasizes practical decision making and problem solving abilities rather than merely your academic aptitude. अब NMAT का एग्जाम देके आप अपना academic aptitude तो प्रूव कर चुके हो, that's why you have received the calls. Now here you need to prove your readiness, as in how ready you are for the NMIMS MBA program. So that is the reason and that is the purpose of keeping this competency test and AI based interview. Moving forward, let us look at the weightage as well. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है to understand कि आपका selection criteria कैसा है. NMAT score का weightage, now there has been a difference observed from last year to this year's weightage. तो NMAT का score का weightage was 20% last year, इस बार 10% है. Competency test का weightage last year 50% था, इस बार 60% है. तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा वेटेज है. मोर देन योर एनमैट एग्जाम, कॉम्पिटेंसी टेस्ट होल्ड्स द वेटेज. पर्सनल इंटरव्यू की बात करूं, 10% वेटेज है, इस बार 15% है. वर्क एक्सपीरियंस 10% था लास्ट ईयर, इस बार 15% है. अकेडमिक्स की बात करूं तो लास्ट ईयर 10% था, इस बार उन्होंने अकेडमिक्स का कोई वेटेज नहीं रखा है, रादर दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी पर्सनल इंटरव्यू एंड वर्क एक्सपीरियंस वाला थिंग. ठीक है, so these are the changes. तो ये 2026 का अपडेटेड वेटेज है. अगेन 100% हो जाता है ये टोटल करके. दिस ऑल्सो कम्स टू 100%. Okay, so make sure you thoroughly prepare for the competency test, because you can see there is a 60% weightage over here plus your interview as well. Moving forward, now what is the paper pattern? How does the paper pattern of this test looks like? Again, it's a CBT test. आपको CBT test देने की अब तो आदत हो चुकी है. 45 minutes का ड्यूरेशन है. 9 questions of VA verbal ability, mental ability के 6 questions, managerial ability के 5 questions, which comes to total 20 questions. तो तीनों को मिला के आपके 20 questions होते हैं. जंपिंग थ्रू द सेक्शंस इज अलाउड, आप कर सकते हो, सेक्शंस के बीच में स्विच आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, 4 ऑप्शंस रहेंगे फॉर ईच क्वेश्चन. 3 मार्क्स यू गेट +3 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर इनकरेक्ट. एनमैट में भले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट यस कॉम्पिटेंसी टेस्ट में यू हैव नेगेटिव मार्किंग, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. नाउ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड. अब ईच सेक्शन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो वर्बल एबिलिटी में फिट इन दी सेंटेंस इन दी पैसेज टाइप के क्वेश्चन, जैसे आपने कैट वर्बल में पढ़ा है. देन यू हैव समरी ऑफ द पैसेज टाइप के क्वेश्चन जो आपने कैट वर्बल में ऑलरेडी पढ़ा है. इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. देन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है विथ 3 क्वेश्चन. सो यस,
ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कैट वोवल में और बाकी एग्जाम्स के लिए, वैसा रहता है। देन मेंटल एबिलिटी की बात करूं, 1 LR सेट विथ 4 क्वेश्चंस, ठीक है। देन यू हैव क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, अजम्पशन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंटल में। मैनेजरियल एबिलिटी में क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम फेस्ड इन द मैनेजमेंट, मोस्ट ऑफ द अदर क्वेश्चंस इन द सेक्शन वर इन्फरेंस टाइप क्वेश्चन। नाउ लास्ट ईयर किस टाइप से आया था उस टाइप से ही मैं फॉर्मेट बता रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द अदर क्वेश्चंस इन द सेक्शन इन्फरेंस टाइप के भी होते हैं इसमें मैनेजरियल एबिलिटी में। अगेन तीनों सेक्शंस का टोटल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गेट दैट इज 20, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, सम सैम्पल क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम, सो दैट यू आर रेडीली प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगेन जो मैनेजरियल एबिलिटी वाला सेक्शन है दैट इज मोर और लेस लाइक योर दैट डिसीजन मेकिंग का सेक्शन। तो अगर आपने डिसीजन मेकिंग की तैयारी बहुत अच्छे से की है तो आपको इस सेक्शन में उतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, टीम मेंबर रिक्वेस्ट इमरजेंसी लीव ड्यूरिंग अ टाइट प्रोजेक्ट डेडलाइन, हाउ वुड यू हैंडल दिस। देन आपको अरेंज करना है टास्क को इन प्रायोरिटी ऑफ अ मैनेजर, रिस्पॉन्डिंग to a client mail, conducting daily briefing, resolving technical issues. So you have to arrange it in the order of priority from a manager's perspective. Then decision making a question, your team is divided on implementing a new tool with a steep learning curve. What would you do? So these type of questions only would come in your competency test, especially for the managerial ability section. Now, how does the AI interview process look like? Let us also look into that particular thing. तो आपके एआई के पास एसओपी और प्रोफाइल क्वेश्चंस ऑलरेडी होंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे वो उसी के अराउंड टेलर होंगे। जो भी आपने अपने एसओपी में रिस्पॉन्सेज भरे हैं, एआई उसी के हिसाब से क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। नेक्स्ट, काउंटर क्वेश्चंस विल अकर फ्रॉम योर आंसर्स, सो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू स्पीक। जो भी आप बोल रहे हो बी वेरी केयरफुल, वेरी श्योर, बिकॉज आपसे काउंटर क्वेश्चंस भी किए जाएंगे, ठीक है। एआई रिकॉर्ड्स ऑल योर इंटरप्शंस, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, बीच में पॉज ले रहे हो, सब कुछ रिकॉर्ड होगा। द प्रोफेसर विल बी आस्किंग फॉलो अप क्वेश्चंस टू, तो आपके फॉलो अप क्वेश्चंस भी होंगे। तो पैनल में देयर वुड बी 1 or 2 members टू, जो आपसे फॉलो अप क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ओके, द इंटरव्यू टेक्स प्लेस विद अ टाइमर, ठीक है। तो क्योंकि एआई बेस्ड इंटरव्यू है तो ऑफकोर्स टाइमर भी रहेगा, सो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी मच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस क्वेश्चन में कितना आंसर, कितनी देर, कितने ड्यूरेशन के लिए बोलना है, ठीक है। सो दैट इज हाउ द इंटायर एआई ड्रिवन प्रोसेस ऑफ द इंटरव्यू वुड लुक लाइक। नाउ द बिग थिंग इज द इम्पॉर्टेंट डेट्स। अब इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपका दैट इज ₹1200 फॉर दी रजिस्ट्रेशन। अगर जिनको भी कॉल्स आया है तो उनको ₹1200 का रजिस्ट्रेशन फी पे करना है। लास्ट डेट टू रजिस्टर इज 25 जैन, और आपकी जो इंटरव्यू स्लॉट्स हैं दैट इज बिटवीन 31 जैन टू 26 ओके। टेस्ट और इंटरव्यू के स्लॉट्स इज 31 जैन टू 26 फरवरी, ऑल्दो सेम ही डे पे होगा। आपका कॉम्पिटेंसी टेस्ट, एआई इंटरव्यू सब सेम डे पे होगा। इट विल बी अ वेरी लॉन्ग डे फॉर यू, सो मेक श्योर यू आर वेल प्रिपेयर्ड। ऑफकोर्स आपको वेट करना पड़ेगा बिकॉज देर आर अदर स्टूडेंट्स टू, बट आप जब स्लॉट चूज कर रहे हो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपको बाकी के कॉलेजेस से भी अगर कॉल्स आ रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल कि आप किस डे का स्लॉट चूज कर रहे हो। उस दिन कुछ और तो नहीं है, कोई दूसरा इंटरव्यू या कोई दूसरा एग्जाम तो नहीं है। So make sure you're very careful with choosing these slots. Okay, ठीक है. So this is what it is. Okay, the entire format I have explained. Okay, guys, I hope this session was useful for all of you. I hope you all have understood by now कि competency test और जो AI based interview है, इसकी क्या importance है, क्या value है for NMIMS. So make sure you're well prepared for it. Also, if you're going through that phase where you're still unsure कि interviews के लिए कैसे prepare करना है, am I ready or not, then we have a batch that is right here for you, that is Admit Sure. आप बैच GDPI के लिए प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम दिस बैच. We have a special discount also. So if you have 90 percentile and above in CAT, so we have special discount for you. Again, you will also get 2 mock interviews per call. अगर आपको कॉल आया है किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी कॉलेज से, तो आपको 2 mock interviews भी मिलेंगे. अगेन you can know more about this by going through the link that is given in the description box. पूरे बैच की जो डिटेल्स है आपको वहां पे मिल जाएगी. So make sure you check that out.
Also, do follow us on other platforms as well. That is our Telegram channel, where we'll be sharing all the interview related transcripts, some tips related to your SOP, GDPI, everything. So, you will get all of that on our Telegram channel. Also, do follow us on Instagram as well. If you're missing out on any update from here and there, you can catch right on our Instagram channel. And if you're watching this video for the very first time, don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe to Supergrads CAT YouTube channel.